Hello everybody, a very good morning on Saturday, and I just thought I'll share some news with you, with my students and my clients regarding Australia, related to Australia. And this news came on 3rd October, where the Honorable Tony Burke, Member of Parliament, had announced that they're going to pause the evidence levels. And evidence level pause कर रहे हैं to align with the ESOS Act, Ministerial Direction 107 के साथ. And what does evidence level means? In simple words, students were aware that every university has a level. कई universities would fall under level 1, level 2 and level 3. And ये regular change होती March or September के अंदर, depending on the number of students they have enrolled and retention rates and few other quality things they looked into. And then उसके बाद evidence levels change होते रहते यूनिवर्सिटी के, like किसके कितनी refusal है, कितनी retention है. And lately what was happening was that students, when they became aware कि level 1 का visa जल्दी आता, so lot of students would apply to level 1 university, even though that university is highly ranked and उसकी tuition fees was at the higher side, but students would still apply just to get a positive visa results. बिकॉज लेवल 1 की एप्लीकेशन जल्दी पिकअप होती थी, लेवल 2 की उसके बाद पिकअप होती, लेवल 3 में थोड़ा सा लेट पिकअप होता, थोड़ा सा अप्रूवल रेट भी कम था, एंड विच स्टूडेंट्स बिकेम अवेयर ओवर द टाइम. सो स्टूडेंट्स जब लेवल 1 में जाते थे, आफ्टर 6 मंथ दे वुड शिफ्ट इनटू अ लोअर रैंक यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी विच हैज रीजनेबल ट्यूशन फीस और अ यूनिवर्सिटी जो लोकेशन में दे वांटेड टू गो. सो दिस मेंट that students were using level 1 university to get an entry into Australia. And उससे होता क्या था, एक तो स्टूडेंट्स के स्टडीज में ब्रेक आता था, सेकंड क्या होता था, उनके कैरियर पाथ या कैरियर ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं था, बिकॉज दे स्टडीड 1 यूनिवर्सिटी फॉर 6 मंथ एंड सडनली दे शिफ्ट इनटू अनदर यूनिवर्सिटी. सो ये पॉज होने का मतलब है कि दैट ऑल यूनिवर्सिटीज हैव कम इनटू सेम कैटेगरी, सेम लेवल्स. सो विच मीन्स दैट स्टूडेंट शुड नाउ अप्लाई to the university of their choice, looking at the tuition fees which they can afford and the location they want to go to. So they do not need to enter into level 1 university and then shift after 6 months. That was a wastage of time and money as well. And lot many agencies, चाहे बड़ी हैं चाहे छोटी हैं, कई agencies कोई चीज़ का पता भी नहीं है. They are still promoting students that they should apply to level 1 university, जबकि level 1 and the pause हो चुका है इस time. So if you're looking for some expert advice and guidance, you can get in touch with me. We have got 33 years of experience and our company opened in 1991, and I've got an expert team related to Australian education. So if you're interested, please come and meet me, क्योंकि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कौन सी लेवल यूनिवर्सिटी में जा रहे हो. As students, when they saw July वाला session, the visas, they got little disappointed because level 1 में जल्दी वीज़ा आ गया था, level 2 में थोड़ा लेट आया था, level 3 के कई एप्लीकेशंस पिकअप भी नहीं हुई थी. सो आप बेझिझक मेरे से इन टच में आइए, आई विल गाइड यू, गिव एन एक्सपर्ट एडवाइस, देन यू कैन मेक एन एप्लीकेशन. एंड इफ यू वांट टू स्पीक टू मी ऑनलाइन, माय numbers are mentioned below. So we look forward to see you. Bye bye, take care.